सिर्फ तुझे सोना है। और सब सोता है। मैं तो नहीं सोई क्योंकि तू नहा रही थी, वरना तू भी 7 बजे उठती, मुझे उठाना पड़ता तुझे। कल से तू 6:30 में 7 o'clock. वही तो। So before I start anything and before I wear my coat over this shirt, I have to see. I got a burn over here last night when I was ironing. So let's put the burn here. मेरे बाल अभी भी नहीं बने हैं क्योंकि मेरे बाल गीले हैं। बाल थोड़े गीले हैं तो थोड़ा बाद में भी बनाऊंगी। सो ऑल सेट टू गो गाइज, बाय। So guys, it's 3:39 right now and we are back. Now I'll see you once I am in my comfies. Changed into my comfies now. Let's see what's there for lunch and then I'm going for a nap. Yay. And I'll probably wake up at it's 4. I'll wake up by 5:15 as usual. So see you in the evening. Evening guys. Ouch. So it's 5:30. I woke up a little late because I was watching something. So that's my tea. Think about your day and ask you how it is. So guys, as you all can see, I am here on my bed again. So I'm here to study now. Because it's almost the end of the session and we are done with all of these subjects, almost all of these subjects. So now we have revision test in the schools, so I have to prepare for that. Right now I'm preparing for economics. Yeah, so let's start. I'm gonna do it on my bed. आलस तो इसे कहते हैं। मेरा क्लचर बस वहाँ पड़ा हुआ है उस कोने में, लेकिन मैं इतनी कंफर्टेबली बैठी हूँ. आई एम सो कंफर्टेबल राइट नाउ दैट आई एम नॉट at all interested to move and bring my clutcher
That's so lazy of me. I don't want to move right now also. I'm not gonna move. It's almost 2 hours of me doing this chapter and I'm not yet confident enough in this chapter. What's happening with me? Okay, so now I am going back to my study table because not this mess is not mine, because I'm so done being lazy. So now I have to get up and go to my study table. इकोनॉमिक्स का टेस्ट था, उसके लिए तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मैंने कर ली है, थोड़ी बहुत ही कहूँगी बिकॉज कॉन्फिडेंस तो अभी भी नहीं है. एंड नाउ आई एम डूइंग माई पॉलिटिकल साइंस का होमवर्क, सम रिटन वर्क विच आई डिड इन रफ बिकॉज इतने मोटे मोटे रजिस्टर्स लेके जाना और बैग भारी करना इज़ समथिंग नॉट मी, बट कल से मुझे लेके जाना पड़ेगा बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट डे एंड आउट ऑफ नो वेयर स्कूल खुले थे ऑनलाइन के, उससे रात को मैसेज आया था. इस वजह से मैं वैसे तो मैं बहुत ही भारी बैग करके गई थी बट हाफ ऑफ द थिंग्स वर नॉट इन यूज, सो आज थोड़ा ढंग से बैग लग पाएगा. सो लेट्स डू द होमवर्क. With one of the subject that is pol science. ये यहीं तक है ना? Yes. मैं यहाँ से लिख रही हूँ, फिर एक यहाँ पेज, फिर 2 पेजेस यहाँ. So done with political science का काम, but I'm still left with English language वाला काम. तो अभी तो हाथ बहुत दर्द कर रहा है एंड मुझे साइकोलॉजी का थोड़ा 2-3 पेजेस है वो पढ़ने हैं. तो I'll probably do that and then I will go for English language because उसमें बस थोड़ा सा लिखना है और मेरे पास राइट अप है, बस वो कॉपी मारना है. तो I'm back to my comfort zone for 2 reasons. First is the plan is just to read and ऐसा कुछ याद करने वाला नहीं है, तो बस 5-6 पेजेस है वो रीड करने, so I can do it in my comfort level. And the other reason is मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है. That's the only reason. That's the other reason. That's not the only reason. तो चलो पढ़ाई शुरू करते हैं. Ready? Now, as a foodie, it's my duty to leave the work and go for food. Yeah.
So guys, that's it for this video. Hope you like this video. Don't forget to like, share, subscribe to my channel. Bye.